All right, assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing well. So in this session, we are going to quickly go over all the transformations concepts that you need to know about in O-level maths. So let's begin. First of all, we need to know that there are four transformations that are there in the syllabus: translation, reflection, rotation, and enlargement. So let's begin with translation first. So translation क्या होती है? It's basically a shift of an object to another place. वो object आपका उठा के कहीं और रख दिया. How is it described? It's described by a column vector like this: x and y. X here represents the horizontal component and y represents the vertical component. Horizontal component होता है उसमें अगर plus आ रहा हो, so that means you're moving towards the right. अगर minus आ रहा हो, you're moving towards the left. If you have plus in the vertical component, that means you're moving up. If you have minus in the vertical component, that means you're moving down. Okay, so this is how a translation is represented using a column vector. Now, what is a translation? आपका shift हो रहा है to another position. आपकी size same रहता है, shape same रहती है, orientation, direction of the object that remains the same as well. This is the simplest of all the four transformations basically. Let's do an example. So we have this triangle here, that's triangle A. We have to translate it by this vector, -3 and 5. Now, what is -3? -3 is the horizontal component, or you can say the x component. 5 is the y component. Okay, so आप कोई भी एक point लोगे अपने triangle के ऊपर. Let's say you take x here. X को आप move कर दोगे 3 units to the left, right? So this means 3 units to the left. And vertical component means 5 units up here because that's positive. So x को आपने लिया, 3 units left move किया, 1 2 3 you get here, and then 5 units up, so 1 2 3 4 5, and x is going to be right here. X bar आपका यहाँ पे आ जाएगा. You can do the same for the other points one by one as well, or you can just draw the rest of the figure here like that. You know कि x से ऊपर 2 units और ऊपर जाके z आ जाएगा आपका, so that's your z dash, and x के right side पे साथ वाले box के अंदर you've got y. So that's y dash, and then you just join those points, and that will be your final result there. So it's going to look something like this. Yeah, आपकी आगे translated figure. Okay. So this is what your translated figure looks like. Okay. Now, what if you had to go the other way around? If you were given that there's a triangle here, that's triangle A, up और ये transform होके C पे चले गई. Okay, the C triangle here is right at the bottom here. C पे आ गई. Okay, how do you describe this transformation? अब देखिए, आपको नजर आ रहा है कि साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, ओरिएंटेशन भी चेंज नहीं हुई है. वही फिगर आपको लग रहा है उसको उठा के बस यहाँ पे नीचे रख दिए, एक उठा के यहाँ पे नीचे प्लेस कर दिए. So it's a translation because of that reason. How do you describe a translation? You will say this is a translation. And then you'll just write the column vector that represents that translation. Column vector के साथ लिखेंगे corresponding points देख लें. So for example, original figure के अंदर x के ऊपर 90 बन रहा है, तो आपके पास result है उसके अंदर 90 का बन रहा है ये. That's going to be your x bar. That's the corresponding point. आप देख लें x move होके x bar पे कैसे आ सकता है. So how many units are we moving horizontally? X को हम 1 2 3 units right आ रहा है. So it's going to be 3 here, the horizontal component, and then you're going 1 2 3 4 5 6 units down. So down ja rahe hain, so that's going to be -6. So this is the column vector that represents this translation. Okay, all right. So that was fairly straightforward. Now the next is reflection. Now, how is a reflection defined? Reflection is defined by a line of reflection. ठीक है, एक line of reflection आप बता दो, that fully describes a reflection. अब इसमें होता क्या है? आपकी जो भी line of reflection है, your object and the image, they are symmetrical about that line of reflection, right? जो left जो उसके एक side पे आपकी figure आ रही होती है, exactly वही figure दूसरी side पे होती है, बस वो flip हो जाती है. So in this case as well, the size remains the same, the shape remains the same. However, the orientation is different. The direction of the image that can change. And you can also remember it this way that so when you're doing reflection, आप उसमें क्या करोगे? जो corresponding points होंगे आपके object के और image के, उनका जो distance होगा from the line of reflection, that is going to be equal. Let's try to understand it using some examples. So let's start with this. Horizontal lines के अंदर reflection कैसे करते हैं? So for instance, you have the most common one, that's one of the most common ones, that's reflection in x-axis. आपके पास ये figure है, that's the object A, इसको आपने reflect करना है x-axis के अंदर. All right, how do you do this? आप individually एक point को देखोगे. So remember, whenever you do transformations,
you look at one point at a time, and that helps you think about it better. So for instance, let's think about this point P here. Line of reflection क्या है? X-axis. This is the line of reflection. अब line of reflection horizontal है, तो perpendicular distance देखना है आपने. तो P का perpendicular distance किस तरह होएगा? आप देखें vertical line इस तरह से बनेगी. आप बस vertical boxes count कर लें. एक box ऊपर है. आपके line of reflection से P is just one box up like this. So you go just one box down here. On the other side of the line of reflection, that's going to be your P dash. Similarly for Q, it's one box up. You go one box down there. That's going to be your Q dash. For R, it's three boxes up. Up three boxes नीचे चले जाओ. Your R dash is going to be right here. So your reflected figure looks something like this. That's your reflected figure. Now you can do this in any horizontal line. कोई भी horizontal line होगी, आपने क्या करना है? Vertically boxes count कर लेना है. So R को देख लें. अब y equals 4 के अंदर आपने reflect करना है. What happens? You look at this distance here. R is 1 unit down, so it's going to be 1 unit up there. After reflection, R comes here. Then P is 3 units down from that line of reflection, right? 3 units down. अब 3 units ऊपर ले जाओगे उसको, and that's going to be right here. Q is again 3 units down, but at this point here, आप उसी तरह 3 points उसको 3 units उसको ऊपर ले जाओगे, 3 boxes ऊपर ले जाओगे. That's going to be a Q dash, and that's your final result. That's your reflected figure. Okay. अच्छा, what happens when you have to reflect in the y-axis or any vertical line? अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपकी line of reflection vertical है, तो आप जो boxes count कर रहे होगे, आप horizontal boxes count कर रहे होगे इस तरह से. तो R का distance देखिए यहाँ से कितना है? It's one box like this. So one box on the other side, that's going to be your R dash. Okay. Similarly for P is also one box on the right. So you go one box on the left side. On the other side of the line of reflection, that's going to be your P dash. And then Q is 2 units on the right. So you go 2 units left, and that's your point Q here. And your triangle looks something like this. Okay. Now this applies for any vertical line of reflection. आपने क्या करना है? Horizontally boxes count कर लेना है, because horizontally उसके perpendicular होगा उस line of reflection के. Q का distance इस line of reflection से क्या है? So this is the line x equals 4. Let's look at the distance of Q. Q is 2 units on the left. आप 2 units right पे चले जाओ. That's going to be a Q dash. Similarly, P is 3 units to the left. आप 3 units right पे चले जाओ. That's your P dash. For R is 3 units left पे. उसको 3 units right पे ले आओ. That's going to be your R dash like this. Okay. And then you just join these points, and that's your final result. This is the reflected figure. Okay. So that's what happens when you have horizontal or vertical lines. Now, what if you have lines that are not horizontal or vertical? So most common amongst them are the lines that have a gradient of 1 or -1. So one gradient आपका, for example, इस line का होता है. That's a very common line. Y equals x. इसके अंदर आप किस तरह से reflect करते हो? अब देखें, जो भी आपको इस तरह की लाइन होगी ना gradient 1 की, y equals x or any other line with gradient 1, ये हमेशा इस तरह से पास कर रही होती है. If you look at the smallest box here on this grid, so आप ये box देखें, ये इसका diagonal बन रहा है, right? ये देखें, इस box का square का diagonal बन रहा है. तो इसका perpendicular क्या होएगा? इसका perpendicular distance आप calculate कर रहे होगे, you will be looking at this diagonal here. दूसरे diagonal के ऊपर ये आपका perpendicular बन रहा होएगा. So whenever you have to reflect in lines like these, y equals x line हो या कोई भी और line से gradient 1 आ रहा हो, यानी कि वो इस छोटे square के corner से pass कर रही हो, आपने simply क्या करना है? Figure पे इस direction के अंदर दूसरे diagonal के ऊपर boxes count कर लेना है. इस direction के अंदर boxes count कर लेना है. So let's do that here. What do we have? We have these points P, Q and R. अभी देखें यहाँ पे ये भी है कि line of reflection जो है figure के अंदर से pass कर रही है. Now, if you're looking at one point at a time, this will not confuse you because आपने सिर्फ एक point करके reflect करना है. तो P तो है वो line of reflection के ऊपर ही आ रहा है. Remember, जो भी चीज line of reflection के ऊपर आती है, that does not change. So P stays here. So this is your P dash. P does not change. Q देखें, line of चलो पहले R देख लेते हैं. R line of reflection से कितना दूर है diagonally? So remember, हमने इस तरह से देखना है ये diagonal. This is one box diagonally like this. अब उसी तरह से one box diagonally नीचे आ जाओगे. That's going to be your R dash. Similarly, Q देखें कितना है diagonally? Q is half a box diagonally. तो आप half a box दूसरी side पे चले जाएं. That's going to be your Q dash. So this is what your figure looks like now. It's going to be something like this.
Okay, P dash, Q dash, and R dash. This is your final result. This is the reflected figure. If you look at one point at a time, this will not confuse you. Similarly here, if you have any other line that has gradient 1 as well, आपने उसी तरह देखना है इसको diagonally boxes count कर लेना. Okay, so let's do that here. P को देखें, it's 1 box here and then 1.5 box. So you just go 1.5 box on the other side, so half and then 1. That's your point P dash. Achha, let's do R. R is half box downwards, half box ab upar chale jaye diagonally. That's your R dash. Similarly for Q, you go diagonally like this, 1 box and 2 boxes. So 2 boxes on the other side, 1 and 2. That's going to be your Q dash. So your final result here after this reflection looks like this. So that's how you reflect in lines that have gradient 1 that includes the line y equals x. What if it's the other way around? Gradient here that is -1. So for example, the most common line there is y equals minus x. It looks like this. How do you reflect in this? अब यहाँ पे देखें ये वाला diagonal है, sorry, ये वाला diagonal है छोटे वाले box का in this direction, right? तो इसमें जब आप कर रहे होगे, इसमें जब आप distance measure कर रहे होगे, perpendicular distance आप कौन सा देखोगे? दूसरे diagonal के ऊपर, because this makes it perpendicular here. आपने क्या करना है? इस diagonal के ऊपर boxes count कर लेने हैं. So let's do that here. For P, this is 1 box diagonally. So you go 1 box on the other side diagonally. That's your point P dash. Okay, Q, it's 1 and 1.5. So you go half and 1 more. That's going to be your Q dash. And then finally, you've got R there. That's 1 box and then 2 boxes. So 2 boxes on the other side, 1 and 2. That is your R dash. Okay, now you just join those points and that is your final result. So this is what your figure looks like now. This is the reflected figure. All right, so you can just mark that point P above there. So P was right there. This is your P dash, Q dash and R dash. ठीक है, अब इसी तरह कोई भी और line हो जिसका gradient -1 आ रहा हो, you'll use exactly the same thing here. मतलब इस तरह से boxes में इस तरह diagonally जा रही हो, उसका जो 90 degrees होएगा वो इस direction के अंदर diagonal होएगा. आपने इस तरह से boxes count कर लेने हैं. So R का देख लें. R is 1 box here diagonally, perpendicularly. 1 box on the other side. That's going to be your R dash. ठीक है, जितना एक साइड पे होगा उतना डिस्टेंस दूसरी साइड के ऊपर. Q is 1 box and then 1.5 box. So half box here and another box here. That is your point Q dash. For P, that's 1 and 2 boxes. So you go 1 box and 2 box here. That's your point P dash. So the transformed figure looks something like this. That is your final result here. Okay, P dash, Q dash, and R dash, that is the reflected figure. So this is how you can do it for these common lines. कभी-कभी ऐसा हो जाता है rarely कि वो slanted हो और उसका gradient 1 और -1 के अलावा कुछ और हो. उसमें फिर आपको ruler से ही करना पड़ेगा. Perpendicular distance protector के साथ आप देख सकते हैं उसको 90 degrees रख के कि perpendicular distance आप दोनों sides पे जो है वो कर लो और equal distance रख लो perpendicular on both sides. So उसमें यहाँ पे इस तरह की कोई method नहीं चलेगा. वहाँ पे आपको खुद से जो है वो protector use करके ruler use करके perpendicular distance दोनों sides पे equal रख के करना होगा. Now for some common reflections, some of you might have learned it like this as well. So if you have done it like this, just quickly go through this. Although I personally find it harder to remember, but if you are used to doing this, that's also fine. So यहाँ पे अगर आप x-axis पर reflect करो, remember it only works for these lines on the left side. Y equals -x, y equals x, y-axis and x-axis. को अगर आप generalize कर लें, horizontal line कोई भी हो जाए, vertical line कोई भी हो जाए, line with gradient 1 हो जाए, line with gradient -1 हो जाए, तो उसमें फिर ये वाला method नहीं चलेगा. इसमें आप कुछ और जो है वो changes करनी पड़ेंगी, additions करनी पड़ेंगी before this works. So I would recommend that you learn this logic that we discussed here. But in any case, this is what happens for these common lines of reflection. x-axis में आप reflect करते हो तो क्या होता है? Your y coordinate just changes sign. जब आप y-axis में reflect करते हो तो x coordinate जो है उसका sign change हो जाता है. जब आप y और
y equals x में रिफ्लेक्ट करते हो आपके ये कोऑर्डिनेट स्वैप हो जाते हैं. जब आप y equals minus x में रिफ्लेक्ट करते हो, so your coordinates swap and your sign also change. दोनों चीजें एक साथ होती हैं, right? So if you remember it this way, this is what you do in that case. Okay. Now, how do you identify reflection? आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, आपको कैसे पता कि वो रिफ्लेक्शन है? एक तो आपने देखना है कि साइज और शेप सेम होगी, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, जो होगी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाएगी. अब यहाँ पे मसला आता है डिफरेंशिएट करने का रोटेशन और रिफ्लेक्शन में मोस्टली. वो आप कैसे करोगे? आप कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर और अपने इमेज के ऊपर. अगर वो पैरेलल लाइंस आ जाती हैं देन दैट्स अ रिफ्लेक्शन. अगर वो पैरेलल लाइंस नहीं आती तो वो रोटेशन होता है. ठीक है, लेट्स डू एन एग्जांपल आफ्टर दिस. बट इसी तरह से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? You basically just find the midpoints of the corresponding points और उनको ज्वाइन कर देते हैं. That is your line of reflection. Let's do that here. So सबसे पहले आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन है. You have this transformation that maps A onto B. Okay, A जो है वो B पे मैप हो रहा है. You have to describe this transformation. आपको लग रहा हो शायद ये रोटेशन है और शायद रिफ्लेक्शन भी हो सकता है. We are confused about that. How do you figure out which one of the two it is? You just join the corresponding points. अच्छा, corresponding points आपने कैसे मार्क करने हैं? आपने एंगल्स देख लेने हैं. For example, ओरिजिनल फिगर के अंदर 90 डिग्रीज को अगर आपने x कह लिया तो ट्रांसफॉर्म फिगर के अंदर भी 90 डिग्रीज वाले पॉइंट को आपने x कह दिया. So that's x bar. Okay. इस तरह ओरिजिनल फिगर में 90 डिग्रीज के साथ जो छोटी वाली साइड है उसके एंड पे हमारे पास y है. तो आपके पास जो ट्रांसफॉर्म फिगर है 90 डिग्रीज के साथ जो छोटी वाली साइड है वहां पे आप y लगा दोगे. एंड देन द थर्ड वन लॉन्गर साइड है 90 डिग्रीज के साथ वहां पे z आ रहा है. इसी तरह आप उसको z मार्क कर दोगे. So once you have marked these corresponding points, what do? You just join them with straight lines. ठीक है, अब इनको स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करके चेक कर लें एक दफा कि आपके पास पैरेलल लाइंस आती हैं कि नहीं आती. x बार को ज्वाइन कर दिया, z बार को ज्वाइन कर दिया. Similarly, you join y and y bar. Now you see these are parallel lines. If these turn out to be parallel lines, that means it's a reflection. ठीक है, so parallel lines आ रही हैं, that means it is a reflection. जब आपको पता चल गया रिफ्लेक्शन है, अब यहाँ लिख दोगे it's a reflection. अब रिफ्लेक्शन को डिफाइन करने के लिए you have to write the line of reflection. So what is the line of reflection here? That's what you have to figure out. Line of reflection कैसे find करते हैं? We basically find the midpoints of corresponding points और उनको join कर देते हैं. So midpoint find करते हैं, z bar का midpoint. आप उसको ruler से भी find कर सकते हो. Just place a ruler that joins z and z bar. उसके middle में देख लो क्या आता है. या आप coordinate से करना चाहते हैं, although that's going to be quite longer. But I would suggest I would suggest basically कि आप ruler use कर लें. लेकिन अगर आप उससे comfortable है ज़्यादा coordinate से, that's also fine. Ruler आप यहाँ पे रखोगे, इसका midpoint z bar का is going to be right here. This is the midpoint of z and z bar. इस तरह y और y bar का midpoint find करोगे, that is going to be somewhere around here. And then you find the midpoint of x and x bar using a ruler. x bar को join करते हुए ruler रखोगे, उसका midpoint देख लोगे क्या आता है. So that's your midpoint for x bar. You have 3 midpoints. You just join them, and that will be your line of reflection. Because आपने midpoints को join कर दिया, so that will be your line of reflection. That looks something like this. I'm going to draw that here. Line of reflection. That basically looks like this. So something's happening here. I can't seem to make this work. Let's try it again. Okay. So this is your line of reflection. Join कर दिया, ये आपके पास line of reflection आ जाएगा. उसने आपने equation लिखनी हो, आपको पता है gradient इसका 1 है, right? Because it is passing through these corners of the box. Gradient आपको 1 है. अगर आपको नहीं समझ आ रही है, आप उसको कोई भी points लेके आप उनको figure out कर लें. Gradient 1 है, y-intercept is 6. So this line is basically going to be y equals x plus 6, right? Y equals mx plus c use करके gradient 1 है, y-intercept 6 है, so you get y equals x plus 6 here. That is the line of reflection. That's how I describe this. Okay, so that's all about reflection. किस तरह से आप line of reflection find करते हैं, किस तरह से identify करते हैं कि वो reflection है. Let's move on to rotation. Now rotation is defined by an angle, और इसके साथ आपको बताना होता है whether that's clockwise or anti-clockwise, except 180 degrees because उसमें फर्क नहीं पड़ता. So angle clockwise or anti-clockwise, and at the same time you also tell what is the center of rotation.
ठीक है, रिफ्लेक्शन के अंदर एक लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन होती है, रोटेशन में एक सेंटर ऑफ रोटेशन, एक पॉइंट होता है. सो दिस इज अ सिंगल पॉइंट, राइट? इट्स नॉट अ लाइन, इट्स अ सिंगल पॉइंट. ओके, अब रोटेशन में भी क्या होता है, साइज और शेप सेम रहते हैं, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. ठीक है, अब आपने डिफरेंशिएट करना हो बिटवीन a reflection and a rotation. What do you do for that? You join the corresponding points of the object and the image. अगर वो parallel lines नहीं आती, that means it's a center of rotation. Okay? अब यहाँ पे आप जब देखोगे तो जो corresponding points, जो distances होते हैं center of rotation से, वो भी equal होते हैं. So that's also something that you should keep in mind. Let's do some common rotations. So let's say you have 90 degrees clockwise rotation about the origin. Origin के about आपने 90 degrees clockwise rotate करना. Okay? Origin is the center of rotation. So origin is the center of rotation. Now, it helps to think of it like this कि आप इस तरह से एक plus sign बना लें. Center में आपका ये center है, center of rotation, middle में, right? ये R आपके पास right पे है. Then you have down, left and up. 90 degrees clockwise rotation करते हैं तो क्या होता है, जो up होगा अगर आप उसको 90 degrees rotate करोगे, ये right बन जाएगा, right? तो up goes to right when you do 90 degrees clockwise rotation. इसी तरह से right goes to down, right? Down goes to left and left goes to up. Okay? Now this basically helps us think here how we have the center of rotation. This is the center of rotation. Center of rotation से आप x पे कैसे पहुंच सकते हो? You have to go 1 unit right, and then you have to go 1 unit up. Okay? जब इसको आप rotate करोगे 90 degrees clockwise, what happens? Right goes to down. So अगर आप यहाँ पे लिख लें, x पे आप कैसे पहुंचे थे center of rotation से? 1 right and 1 up. तो x bar पे कैसे पहुंचोगे? Right कहाँ चला जाएगा? Right will go to down. That's 1 down. And down will go to up will go to right. Up right पे आ जाएगा. So you say this is 1 right. अब center से क्या करोगे? You go 1 down, and then you go 1 right. That is your point. That is x bar. X जो है वो rotate होके यहाँ पर आ जाएगा. Does that make sense? तो आप इस तरह भी सोच सकते हो. पहले आपके पास ये फिगर बन रही थी. X तक पहुंचने के लिए this was the center, this was x. इसको आप 90 डिग्री रोटेट कर दो इस फिगर को, तो क्या बन जाएगी? 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद ये बन जाएगी. तो सेंटर से यहाँ पे आपके पास x बार आएगा. ओके, अच्छा, लेट्स डू इट फॉर y as well. What happens for y? y तक आप कैसे पहुंच सकते हो? From the origin, from the center of rotation. Remember, यहाँ पे center of rotation is important. Center of rotation से आप y पे कैसे पहुंच सकते हो? You go 2 units right. Okay, so you go 2 right, and then you go 1 up. You go 1 up after that. Okay, so 2 right and 1 up. So it's a figure like this. इसको आप rotate कर दें 90 degrees clockwise. What is that going to look like? इस तरह बन जाएगी. But let's confirm this as well. आपको पता है right जो है वो कहाँ जाएगा? Right down पे चला जाएगा. ठीक है? So y bar is going to be 2 down. Right down पे चला गया. अब कहाँ जाएगा? अब right पे चला जाएगा. So it's going to be 1 right. So from the center of rotation, जो भी आपका center है, you go 2 units down and then 1 right, and that's your y bar. ये आपका y bar आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है? I hope that makes sense. Similarly, do this for z. Z तक कैसे पहुंच सकते हैं आप? Z तक पहुंचने के लिए you have to go 1 unit right and then 3 units up. 1 right and 3 up. So let's do it for z. 1 right and 3 up. So z is 1 right and 3 up. So z bar क्या हो जाएगा? That will be right goes down, so 1 down, and up goes right, so that's 3 right. So आप यहाँ से start करके 1 down and 3 right, z is going to be right here. So center से start करके आपके पास ये x bar, y bar, z bar आ गया. That's your rotated figure. Okay. Now, similarly, you could do it for any center of rotation. It's not necessarily for the origin. कोई भी center of rotation हो, आपने बस क्या करना है? Center से देख लेना है कहाँ पे किस तरह पहुंच सकते हैं उस point पे. Let's do 90 degrees anti-clockwise rotation. Okay. What happens in this case? आपका center क्या है? Center is 2, 5 here. 2, 5, that is the center of rotation in this case. Okay. Now, how do you reach x from the center of rotation? X पे कैसे पहुंच सकते हैं center rotation से?
You go one left, okay, one left, and then we go 4 units down. One left and then 4 down. That's how we reach this point X. Okay, one left and 4 down. अब देखिए 90 degrees anti-clockwise rotation में क्या होएगा? Left कहाँ जाएगा? Left will go to down. Okay, X bar is going to be 1 down. Down कहाँ चला जाएगा? Anti-clockwise 90 degrees के अंदर. Down will go to right, so that's 4 right. So अब center से start करके आपने क्या करना है? You go 1 down and 4 right. So that's your point X bar. X bar rotate होके यहाँ पर आ जाएगा. Similarly, let's do it for the others. Y क्या था? Y was from the center. Horizontally कोई movement नहीं है. So 0, left, right. But it's just 1, 2, 3, 4, 4 down. 4 down है sir. So Y bar क्या हो जाएगा? Down कहाँ चला जाता है? Down goes to right when you do anti-clockwise rotation. ठीक है? Down right में चला गया. So that's going to be 4 right. So center से आप क्या करो? 4 right देख लो. 1, 2, 3, 4. That's going to be your Y bar. Then you finally do Z. Z from the center of rotation, that is 1 left and 2 down. So that's 1 left and 2 down. Z bar कहाँ चला जाएगा? Left कहाँ चला जाता है anti-clockwise rotation में? Down पे. So that's 1 down. और down कहाँ चला जाता है? Right पे. So that's 2 right. So center से you go 1 down and 2 right. Is center से, and you get this point here. That is your Z bar. That is going to be a rotated figure when you join these points, X bar, Y bar, and Z bar. So that is the rotated figure about this center of rotation. Okay, so that's how you can think about this, and you can do this for any center of rotation. Center से आपने देखना है आप किस तरह से उन points से पहुंच सकते हो और वो कैसे change हो जाएंगे after that rotation. All right, I hope that makes sense. Let's move on to 180 degrees rotation. What happens in that case? इसमें भी आप उसी तरह use कर सकते हो. ये right side वाला जो plus sign है, देखिए up down चला जाएगा, right left चला जाएगा, down left down up चला जाएगा और left right चला जाएगा, right? So if this was the center now, 2, 4, you can either use that grid. 180 degrees rotation के अंदर वैसे बहुत आसान होता है. आप simply क्या कर सकते हो? आप अपना ruler रखोगे, ruler से एक साइड पे जितना डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है उतना ही डिस्टेंस आप देख लो दूसरी साइड के ऊपर, उतनी लाइन एक्सटेंड कर दो दूसरी साइड के ऊपर, तो z जितना नीचे था उतना ऊपर चला जाएगा. दैट्स गोइंग टू बी योर z बार. उस सेंटर से जितना डिस्टेंस नीचे आ रहा था उतना ही ऊपर चला गया ऑपोजिट साइड पे. इस तरह y देखें, y is 3 units here, तो 180 डिग्री रोटेशन के बाद कहां चला जाएगा? 3 units up. दैट्स गोइंग टू बी योर y बार. इस तरह x का आप देख लें किस तरह आ रही है, रूलर के ऊपर आप रखेंगे. It's like this. इसी लाइन को आप एक्सटेंड कर दो उतना ही डिस्टेंस ऊपर वाली साइड पे. That's going to be your point X bar, and that's your 180 degrees rotation. आपने बस रूलर रखना है, सेंटर से एक साइड पे उस पॉइंट का जितना डिस्टेंस आ रहा है उतना ही डिस्टेंस आपने एक्सटेंड कर देना है दूसरी साइड के ऊपर, and that will be your rotated figure by 180 degrees. Okay, so that is the final result that you get from there. X bar, Y bar, and Z bar like this. That's 180 degrees rotation about this center of rotation. That was 2 and 4. Okay. Now what happens if the angle of rotation was not something common? Let's say 45 degrees angle के ऊपर rotate करना हो गया था आपको, ठीक है? इसमें आप इसे थोड़ा सा tricky है. इसमें आपने क्या करना है? आपने join करना है center of rotation को या पर center of rotation. And remember हमने बिल्कुल start में देखा था center of rotation का distance ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के पॉइंट से और इमेज के पॉइंट से इक्वल होता है. अगर हमने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है इसको, व्हाट विल डू इज यू विल जस्ट जॉइन दीस पॉइंट्स. आप ये सी और जी को, फॉर एग्जांपल आप जी को रोटेट करते हो पहले, लेट्स डू वन पॉइंट एट अ टाइम. तो सी और जी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है? आपने क्या करना है, इतनी कंपास खोल के यू विल मेक एन आर्क हियर. इतनी कंपास खोल के यू विल बेसिकली मेक एन आर्क हियर दैट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. तो आपने इतनी कंपास खोल के आप एक आर्क बना देनी है, ठीक है? which will look something like this. ये आपने एक आर्क बना दी. क्यों आर्क बनाई? क्योंकि C का डिस्टेंस Z के साथ चेंज नहीं हो सकता. रोटेट होने के बाद वो इसी आर्क के ऊपर कहीं पे होना चाहिए, है ना? इसी आर्क के ऊपर कहीं हो सकता है, इससे बाहर कहीं और नहीं जा सकता, क्योंकि उसका डिस्टेंस Z से सेम रहना चाहिए. तो आपने देखना है कि 45 डिग्रीज एंगल किधर बन रहा है. 45 डिग्रीज एंगल आपको कहाँ पे बन रहा है. So how do you measure that angle?
You basically use a protector. आप एक protector use करोगे, आप अपने protector को यहाँ पे रखोगे C के ऊपर like this, ठीक है? 0 यहाँ से start होएगा. You will measure 45 degrees. This is your 45 degrees. ठीक है? 45 degrees आपने देखा, यहाँ से line extend की. Wherever they intersect, let's say they intersect here, that's going to be your point Z dash. That's your Z dash. ये आपने rotate कर दिया इसको 45 degrees because this angle here is 45 degrees from there and it's anti-clockwise rotation. आपने एक arc बनाई Z पे like this, तो उसका distance same रहे C के साथ और फिर आपने angle measure कर लिया, आपने देखा 45 degrees कहाँ पे आता है, जहाँ पे intersect करते हैं, that's a Z bar. You repeat the same process for X bar and Y bar और इन points को आप join कर दोगे. ठीक है, आप यही चीज आप x पे करो, x पे एक आर्क बनाओ, 45 डिग्री एंगल मेजर करो, c x को ज्वाइन करके, वही आप y पे करो, जो आपके पास c डैश, जो आपके पास x y y dash z dash पॉइंट्स आए, उनको ज्वाइन कर दें, that will be your final figure. So that's how you rotate if the angle is something other than those common angles 90 or 180. All right. अच्छा, अब जो common rotations हैं उन पे आप again if you do it like this, you can just remember it this way. So जो common rotations है वो हो सकती हैं इससे, or center origin होना चाहिए. For example, 90 degrees clockwise rotation or 270 degrees anti-clockwise, it's the same thing. 90 degrees clockwise करें, 270 degrees anti-clockwise करें, they're the same thing. What happens in this case? You swap these coordinates. इनको आपने interchange कर दिया. ठीक है, ये आपने interchange कर दिया, and then you also change the sign of y. ये आपने sign भी change कर दिया y का. Similarly for 90 degrees clockwise rotation, 90 degrees clockwise rotation में क्या आएगा? Again, you change coordinates, you switch coordinates here as well. And then you change the sign of the x coordinate. ठीक है? 180 degrees वाले के अंदर, it's the simplest, you just change the signs of the both coordinates. आपने दोनों के बस sign change करने हैं. And that's your 180 degrees rotation. ठीक है? So that's, if you remember it this way, you can do it. 180 degrees का तो आप याद रख सकते हो. बाकी थोड़ा सा कभी chance होता है that you mix the things up. So you have to know the logic or this process of doing this graphically so that you do not do any mistake there. All right. How do you identify rotation now? Remember, iske andar bhi aapke size or shape same rehte hain, they do not change. However, the direction is different. So how do you differentiate between a rotation and a reflection? Aap corresponding points ko join karte ho, jo result aana chahiye wo non-parallel lines honi chahiye, wo parallel nahi honi chahiye. ठीक है? Then if they are not parallel, that means it's a rotation. So for instance, let's say you have this figure here. ठीक है? आपने identify, so you have to describe this transformation that maps A to B. How do you figure this out? Now it could be a reflection, it could be a rotation, although it does look like a rotation, to be honest, but let's just verify. How do you verify that? You join corresponding points. तो corresponding points को उसी तरह आपने mark करना है जो मैंने पहले बताया, angles देख लें और longest side, shortest side देख लें. Let's join P and P dash. P और P dash को join किया. It looks like this. Join R and R dash, that looks like this, and it's already clear that these are not parallel lines. They're not parallel lines, that means it's a rotation. So that's what you have figured out already. It's not a reflection, it is a rotation. Okay, so it's a rotation. अच्छा, rotation तो पता चल गया हमें. अब rotation के अंदर आपको क्या बताना होता है? Angle, direction and the center. तो angle क्या है और center क्या है? ठीक है, center of rotation बताना है और आपने angle बताना है, whether that's clockwise or anti-clockwise. Okay. Now, how do you figure those things out? अच्छा, इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले आपने center of rotation find करना है. ठीक है? Center of rotation find करने के एक तो तरीका है, formal तरीका, perpendicular bisectors आप draw करेंगे. So you draw perpendicular bisectors of corresponding points on the object and the image. So for instance, P और P dash का perpendicular bisector बनाएंगे आप सबसे पहले. Right, so P or P dash perpendicular bisector, that's going to look something like this. This is the perpendicular bisector of P dash. Then you can also draw another perpendicular bisector. Let's say the perpendicular bisector of R and R dash. What is that going to look like? That will be something like this. ये आपने R dash का perpendicular bisector बना लिया. ठीक है? You know how to draw perpendicular bisectors using a compass. जहां पे intersect कर रहे होंगे, that is your center of rotation. Okay, so this here is your center of rotation. आप verify कर सकते हो. R तीसरा perpendicular bisector बना के भी R और R dash का वो तो हमने बना लिया. Q dash का perpendicular bisector बना के आप इसको verify भी कर सकते हो.
So Q dash to perpendicular bisector is going to look something like this. It could be like this. Not exactly, but yeah, something like this. And that's the perpendicular bisector of Q dash. तो वो भी इसी से पास करेगा. आप तीनों ड्रॉ कर ले बेशक, that you confirm वो तीनों एक ही पॉइंट से पास कर होंगे. That will be your center of rotation. तो यहाँ पे आप देख लें सेंटर क्या बन रहा है. This is 4 and 4. ठीक है, सेंटर रोटेशन आपका 4 4 आ रहा है. अब इसको चेक करने का एक और तरीका भी होता है. एक तो तरीका है, ठीक है, ये आप perpendicular bisectors, this works in every single case, but sometimes to make this process a bit quicker, remember center of rotation का distance आपके corresponding points से equal होता है. So you can just do it mentally sometimes as well. कि आप क्या करें, you take a few possible points और उनके distances check कर ले कि अच्छा उनके distances क्या equal आ रहे हैं. अगर equal आते हैं तीनों points से, then that is the center of rotation. So for instance, let's try this. हम यहाँ पे कोई point assume करते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा let's try R and R dash first. और let's say P and P dash. P और P dash distance हमारा ये midpoint बन रहा है उसका. ठीक है, ये हमारा midpoint बन रहा है P और P dash का. ये इस point का distance P और P dash से equal है. Let's see if this is the center rotation. Let's check this out. हम कुछ points check कर लेते हैं. ठीक है, अच्छा इसका distance P और P dash से तो equal है. What about Q and Q dash? Well, Q dash से ज़्यादा करीब है, Q से कम करीब है. So we have to go a bit closer to Q dash, or closer to Q now. लेकिन keeping in mind कि P और P dash का distance equal है, so हम कोई और point choose करते हैं यहाँ पे. This does not work. Let's take another point. Let's take this point here. अच्छा इसका distance दोबारा से P और P dash से equal है. अब उसको देख लें. Q और Q dash से, well, it's still not the same. Okay. R dash से भी same नहीं है. आपको थोड़ा सा R dash की तरफ जाना है और Q की तरफ जाना है. Q की तरफ भी जाना है और R dash की तरफ भी जाना है क्योंकि उनसे distances ज़्यादा आ रहे हैं. So how do you do that? Let's move a bit more towards the right. Let's say एक और point यहाँ पे ले लेते हैं. आप ये वाला point check कर लें पहले, फिर आप देखिए वहाँ पे भी नहीं आ रहा, फिर आप थोड़ा सा नीचे आए. Let's say this point R dash का distance यहाँ से देखें, it's still not the same, right? Q dash का, that's also not the same. P dash का same आ रहा है अभी भी, so that doesn't work either. Let's take another point here. Let's say we take this point. अब यहाँ पे जब पहुंचेंगे कुछ points यहाँ पे try करके and doing trial and error, तो आप क्या करोगे, आप quickly देखोगे P और P dash से distance equal आ रहा है, right? So this distance is equal P और P dash से. R dash से भी equal distance आ रहा है, वो भी आप check कर सकते हो using a ruler, right? R dash से भी equal distance आ रहा है और Q dash से भी equal distance आ रहा है. So once you have figured out such a point, you know that is the center of rotation. So sometimes it works quicker, sometimes it takes more time. So if you have, you have this experience of doing it like this, then I would recommend it. Otherwise, a perpendicular bisectors draw kar le, then that's also perfectly okay. Now, how do you find the angle of rotation and the direction of rotation? Now, किसी भी corresponding point को join कर दें, and that will give you an idea. So, for instance, center हमारा क्या है? Center is this. This is the center of rotation. Center of rotation से आपने corresponding points को join कर देना किसी भी. So let's say I join C and R here, and I join C and R dash. Center से आपने corresponding points, कोई भी set of corresponding points को join कर दिया. अब देखिए original object क्या था? Original object was this one, this A. That was the original object. A को क्या हुआ? ये object था, ये rotate होके ऊपर चला गया. R is going to R dash here. So you can see here it's a 90 degrees rotation. So it's 90 degrees rotation and it's clockwise. So it's 90 degrees clockwise rotation. So that's how you describe a rotation. You say it's 90 degrees angle. Angle आपने define कर दिया. You tell which direction it is, clockwise or anti-clockwise, and then you tell the center of rotation. So it's a rotation 90 degrees clockwise with center of rotation 4 4. Okay, so that's the rotation. Okay, so that's how you find the center of a rotation. ठीक है, perpendicular bisectors के जो intersection point होता है, और फिर angle of rotation find करने के लिए आप क्या कर सकते हो? Join any set of corresponding points, R dash, P dash, Q dash, किसी को भी आप join कर लें center के साथ और आप उसको देख लें कि अच्छा वो किस तरह से angle क्या बन रहा है और वो anti-clockwise या clockwise. All right, let's go to enlargement now. Enlargement क्या होती है? In which your size of the object becomes either bigger or smaller,
right? लेकिन जो shape होती है इसके अंदर it remains exactly the same as before. Shape change नहीं होती. So that's why you see object और image जो हैं वो आपके similar figures बनेंगे और उनमें वो similar figures वाले जो है वो properties भी apply हो रही होंगी. Now how is an enlargement described? It's described by a center of enlargement. Center rotation होता है, उसी तरह center of enlargement होता है, जिसके about आपकी enlargement हो रही होती है. Then you have a scale factor कि कितना आपने object को बड़ा करना है, छोटा करना है. Now, although it's called an enlargement, अगर आपका छोटा भी हो रहा हो figure object, तो that is also called an enlargement. ठीक है, वो scale factor उसका 1 से छोटा हो जाता है. अच्छा, now let's take a couple of examples. So let's say you've got this triangle A again. You want to enlarge it with scale factor 2. अब scale factor 2 क्या मतलब है कि इसकी जो lengths हैं, इसकी जो sides हैं वो 2 times बड़ी हो जाएंगी, पहले से 2 times बड़ी हो जाएंगी, and the center of enlargement here is the origin. Origin is the center of enlargement. So how does this work here? अब graphically करने का क्या तरीका है, आप इसको देखेंगे, आप इसको अपना रूलर रखेंगे origin पे आप देखें x का कितना डिस्टेंस बन रहा है, इसको बस 2 times कर दें. Origin से जितना भी डिस्टेंस बन रहा है इसको 2 times कर दें. That's going to be your x bar. ठीक है. Similarly, origin से y, this is 1 time, इसको आप 2 times कर दें, इसको और आगे ले जाएं. That's your y bar. Similarly, जो center of rotation है उससे आप z का डिस्टेंस देखा, जितना भी डिस्टेंस है उसको आप 2 times कर दें. You get right here. That's your z bar. So this is the quickest way of just doing it graphically. आप देख लें जितना डिस्टेंस आपके ओरिजिनल फिगर का बन रहा था उसको बस आपने क्या करना है, उसको आपने 2 times कर देना है यूजिंग अ रूलर. एंड बी केयरफुल कि मोस्टली जो है आपके जो पॉइंट्स आ रहे होते हैं दे आर एट द corners of the boxes on the grid. ये corners पे आ रहे होते हैं मोस्टली. समटाइम्स वेरी रेयरली मिडिल में 0.5 पे आ सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा एक्यूरेसी आपको नहीं चाहिए होती. ठीक है, ज्यादा कॉर्नर्स पे आ रहा होगा, कभी वेरी रेयरली दरमियान में 0.5 पे आ जाएगा. अच्छा, so that's your enlargement. अच्छा, इसको करने का एक theoretical तरीका भी होता है. वो क्या तरीका होता है, आप सेंटर से देख लो पॉइंट्स किस तरह से आ रहे हैं. सेंटर से आप x पे कैसे पहुंच सकते हो, सेंटर से आप x पे कैसे पहुंच सकते हो. You have to go 1 unit right and then 1 unit up. Okay, so you write that here, 1 unit right and 1 unit up. It's like this. Scale factor से आपने multiply कर देना उसको. Scale factor आपका बाहर होगा, scale factor से multiply कर देना, 2 से multiply कर दिया. Right, so 2 into 1 1, that means 2 2. अब आपको x bar कैसे मिलेगा, सेंटर से आपने 2 units right done है and then 2 units up. That's your x bar. Similarly for y पे कैसे पहुंचते हैं आप सेंटर से y पे पहुंचने के लिए you have to go 2 units right and then 1 unit up. उसको 2 से multiply कर दें, you get 4 2. That's going to give you your y bar. That's this thing. Y bar तक कैसे पहुंचेंगे आप, 4 right and then 2 up. That's your y bar there. Okay. अच्छा, similarly for z here, z तक आप कैसे पहुंच सकते हो, originally 1 right and 3 up. That's 1 right and 3 up. उसको 2 से multiply किया, you get 2 6, so you go 2 units right and 6 units up. That's your z bar here. Okay, so that's how you can do it theoretically, but it's much quicker if you do it just graphically like that. अच्छा, what if the center is not the origin? आपका वो फिर point of reference बन जाएगा, जो भी आपका center है उससे आप देख रहे होगे. अच्छा, you have to enlarge this with scale factor 3 and center -1 and 3. Okay, again you can either do this using a ruler directly on the graph. So how would you do that? You would say c का z से distance जितना भी बन रहा है उसको आप 3 times कर दो, 2 3. This is going to be your z dash. c का distance x से जितना भी बन रहा है उसको आप 3 times कर दो, so 1 2 and 3. That's going to be your x bar. इस तरह y का जितना भी distance बन रहा है उसको 3 times कर दो. Use a ruler for this. जितना भी distance की length आ रही थी तो 3 times कर दो. Boxes count करके भी कर सकते हैं वैसे, वो भी देखते हैं. 2 times and then you have this 3 times. Your y is going to be somewhere here. This is going to be your y dash here. Yes, ये आपकी figure बन जाएगी. That is your enlarged figure. X bar, y bar and z bar. Okay, so that's your enlarged figure. It looks something like this. Okay, अच्छा इसी को आपने उसी तरह से आपने करना होता है using those vectors. आप क्या करोगे, scale factor को multiply कर दोगे इन vectors के साथ. लेकिन इन vectors कहाँ से आ रहे हैं, आपने center से देखना है आप x y z पे कैसे पहुंच सकते हो. So let's start with this. Center से x पे कैसे पहुंच सकते हैं, we go 2 right and then 2 down.
So that's 2 right and 2 down. 2 and minus 2. इसको आपने क्या किया? 3 से multiply किया. 3 से multiply किया, you get 6 and minus 6. अब x bar कैसे आएगा? 6 units right and then 6 units down. That's your x bar there. ठीक है? Similarly y. Y क्या है? 3 units right and 2 units up. 3 right and 2 units down, sorry. 3 right and 2 down. That's your y. इसको हमने 3 से multiply किया. What do you get? You get 9 and minus 6. 9 minus 6 का मतलब है कि y bar वहां पे होएगा. You go 9 units right and then you go 6 units down. That's your y bar there. Okay, and then finally you've got z there. Z कैसे होएगा? Z is 2 units to the right. उसको 3 से multiply किया, it becomes 6 units to the right. That's z bar there. So that's your enlargement. अच्छा, इसमें scale factor आपका अगर minus हो जाए तो क्या होता है? अगर आपका scale factor negative हो जाए, your figure is going to go on the other side of the center of enlargement. Okay, on the other side of the center of enlargement. So अगर आपका scale factor, for example, -2 है and the center is 0, 3 here, this is the center. So even though the figure is going to become 2 times as before, उसकी length जो होगी वो 2 times होगी as compared to before, लेकिन वो दूसरी side पे होगा center के. Right? For example, z यहाँ पे 1 unit था, it's going to be 2 units on the other side. That's going to be your z bar. Center के x जो था, it was like this here. इतना ही distance, इससे 2 times distance आप दूसरी side पे इसको ले जाओगे. And it's going to look something like this. This is 1 time and this is 2 times. That's going to be your point x bar. Okay, so you can use a ruler for this, and this is what you get. This is x bar. Similarly, y, this is like this on one side. It's a double up side पे चले जाओ. That's 1 time and that's 2 times. That's your point y bar. You join them, and that is your enlarged figure with scale factor -2. Correct. So it's going to look something like this. All right, that's your enlarged figure. इसको भी आप उस तरह भी कर सकते थे using those vectors. आप देखें center से आप z पे कैसे पहुंच सकते हैं? 1 unit right and no units down. तो उसको आपने -2 से multiply कर दिया. You get -2 and 0. Center से up you have 2 units left. That is your z dash. ठीक है? Similarly, x पे कैसे पहुंच सकते हैं? 1 right and 2 down. That's 1 right and 2 down here. So how do you get x bar? You multiply this with -2. -2 से multiply किया, you get -2 and 4. So center से आप क्या करोगे? 2 units left and 4 units up. That's your x bar here. Similarly for y here, y is 2 right and 2 down. 2 right and 2 down. उसको -2 से multiply कर दिया. What do you get? You get -4 and 4. So that's 4 units left from the center and then 4 units up. That is your y bar. Okay. So that's what happens here. Now let's move on. Next we have, so we have to enlarge a with scale factor 1/2 now. So scale factor is now less than 1. जब scale factor 1 से छोटा हो जाएगा, आपकी figure actually छोटी हो जाएगी. ठीक है? 1 से छोटा number होएगा, your figure will actually shrink rather than becoming bigger. It will become smaller. So center आपके let's say -3, 5 है. This is the center. Again, you can use your vectors like that as before. It's right there. You can have a look at that. Ruler से आप क्या करोगे? You'll just see this distance. C से Z कितना आ रहा है? C से Z is this. इसका half क्या होएगा? इसका half यहाँ पे कहीं आ रहा होएगा. That's going to be Z bar. ठीक है? इसी तरह से C से आप X देख लें. You can use a ruler for this. X यहाँ पर आ रहा है. इसका half कहाँ पर होएगा? It's going to be somewhere here. ठीक है? And then you check Y similarly. ये आपका उसको join करते हैं. C और Y को. You don't really have to join it. आपने बस ruler से देखना है. Ruler आपने इस तरह place करना है. उसका midpoint देख लेना है. So that basically turns out to be somewhere here. That's your point, y bar, in the middle of these two numbers. That's y bar here. So your figure is going to look something like this. It's going to look something like this. So आप देखें, आपके figures के जो corresponding lengths हैं, वो half हो गई हैं. So x y जो था यहाँ पे, x bar y bar जो है दूसरे figure के अंदर, that is now half of that. पहले 1 unit था, अब 0.5 unit है. इस तरह xz, that was 2 units earlier. xz was 2 units earlier. Now it is 1 unit. So half होगी आपकी सारी lengths. ठीक है? So that's how you make it.
सिमिलरली आप वेक्टर्स भी देख सकते हो राइट साइड पे, किस तरह से आप देख सकते हो सेंटर से किस तरह से हमने वो बनाए हैं. ओके, नाउ व्हाट इफ यू हैड टू डू द अदर वे अराउंड. आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, आपने सेंटर फाइंड करना है एनलार्जमेंट का. इसको फिगर आउट करना तो बहुत आसान होता है कि आपको अगर साइज चेंज हो रहा है दैट मींस इट्स एन एनलार्जमेंट, सो दैट्स प्रीटी ऑब्वियस. So how do you find the center of enlargement? You just join the corresponding points of the object and the image, and that the point of intersection will give you the center of enlargement. Corresponding points को join करेंगे, जहाँ पे intersect करेंगे, that is the center of enlargement. And how do you find the scale factor then? या आप कोई भी corresponding ratio देख लेंगे अपने image के ऊपर और object के ऊपर, और length of image divided by the length of the object, corresponding lengths की ratio, that is going to give you the scale factor. और यहाँ पे अगर वो सेंटर के ऑपोजिट साइड्स पे तो नेगेटिव होएगा, अगर सेंटर के सेम साइड पे तो पॉजिटिव होएगा. ठीक है, सो पॉजिटिव k is when the object and image are on the same side of the center. Negative k is when they are on the opposite side of the center. जब नेगेटिव k होता है ना, आपकी फिगर आपकी इन्वर्ट भी हो जाती है, आपकी फिगर आपकी इन्वर्ट भी हो जाती है, उल्टी हो जाती है फिगर नेगेटिव k के केस में. ठीक है, और फिगर आपकी बड़ी कब होती है? जब आपकी k की वैल्यू या तो 1 से बड़ी हो, या तो 1 से बड़ी हो k की वैल्यू, या फिर -1 से छोटी हो. उसका मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा हो तो आपका ऑब्जेक्ट बड़ा होएगा. अगर आपका मैग्नीट्यूड -1 और 1 के दरमियान में है, अगर आपका k की वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केल फैक्टर इज लेस देन 1, देन द ऑब्जेक्ट बिकम्स स्मॉलर. ओके, इसमें सिमिलर फिगर्स वाले फॉर्मूलाज भी आपके अप्लाई होंगे. उस तरह से यूजिंग सिमिलर फिगर्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो एरिया ऑफ इमेज और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट की जो रेशियो होती है, दैट इज गोइंग टू बी स्क्वायर ऑफ k स्क्वायर, बिकॉज़ दैट इज k इज द रेशियो ऑफ द लेंथ, उसका स्क्वायर यहाँ पर आएगा. ठीक है, अच्छा, so let's say you have this figure a and b. You have to describe the transformation that maps a onto b. How do you do this? आपको नजर आ रहा है कि the size is changing, so this is going to be enlargement. That much we understand. This is an enlargement. However, we have to describe this enlargement now. So you have to tell two things: what is the center and what is the scale factor. So I would recommend you find the center first. That will make it easier for you to think about the scale factor's sign. So how do you find the center of enlargement? You mark corresponding points. So this is x, y, z like this. दूसरी figure के अंदर जो 90 degrees होगा वो x होएगा. Smaller side is then y, and then this bigger side is x, bigger side is z bar. Let's join corresponding points. Corresponding points को join कर लेते हैं. z z dash, z z dash. Then you have y dash. That's your center of enlargement. But just to confirm, let's do the third one as well. X bar को भी join कर लेते हैं. This is what we get. That's your center of enlargement. That is the center of enlargement, which is this point here. That's 3 and 3. Okay, so center is 3 and 3. अब scale factor क्या होगा? Take any corresponding length. X y original था. X bar y bar क्या हो गया? 2 हो गया. So this was 1, this was 2. K क्या हो जाएगा? K is going to be, और image की length divided by the object की length, that's 2/1. ठीक है, अगर आप ये corresponding length use करें. But since the object and the image are on the opposite sides of the center, यहाँ पे ये negative पे आ जाता है. So scale factor is going to be -2 here. आपकी figure भी देखें invert हो रही है, उल्टी हो रही है figure A और B. So that's why the scale factor is negative there. So that's -2 scale factor. All right. Now, how do you, so just to summarize all of that, how do you identify a given transformation? You basically look at the first thing that you notice is whether the size is the same. अगर size same नहीं है, size change हो रहा है, that's pretty obvious. That's an enlargement. आप उसको describe कर दोगे using describe कर दोगे by the center of enlargement and the scale factor. Okay, दो चीजें वहां पे लिख दोगे. That will be your description. अगर size same रह रहा है, फिर आप चेक करोगे क्या orientation same है, direction same है, क्या आपको लग रहा है कि फिगर उठा के बस आपने दूसरी जगह प्लेस कर दिया? Is it just a shift? If that is the case, then that is translation. उसका आपने translation vector से बताना होता है vector क्या है. If that is not the case, अगर उसकी orientation या direction change हो रही है, तो फिर क्या है? It's either going to be reflection or rotation. किस तरह से identify करोगे? Corresponding points को आप join कर दोगे straight lines के साथ. If they turn out to be parallel, that's a reflection.
अगर वो पैरेलल आ जाते हैं रिफ्लेक्शन है, आपने लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बतानी है यूजिंग द मिड पॉइंट्स. अगर वो पैरेलल नहीं आती स्ट्रेट लाइंस, then it's a rotation and you have to tell the angle whether it's clockwise, anti-clockwise, and you also have to tell the center of rotation. Okay, so that's how you think about which transformation this is. Okay, now let's come to matrix transformations. Matrix transformations में क्या होता है? Matrix transformations के अंदर you have to basically remember some common transformations के matrices, right? So for example, you have to know कि reflection जो है x axis में, y axis में, y equals x, y equals minus x, इन सब के अंदर reflection जो होती है, उनके किन matrices से represent होती है. Now, it's hard to remember all of them, you know, it's hard to memorize all of them basically. So this is the method to help you remember them. Okay, and this is actually the way they are created. We start with this identity matrix. Identity matrix आप start करते हो 1 0 0 1. So you write these points like this, A and B. आपने एक पॉइंट, हमने दो पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर कर लिया जो आप नजर आ रहे हैं इस फिगर के अंदर. 1 point is 1 0 जिसका पहले लिखोगे यहाँ पे 1 0 पहले लिखेंगे, 0 1, that's this point here, and this is called an identity matrix 1 0 0 1. इसको यूज करके आप सारे मैट्रिसेस फाइंड कर सकते हो. ठीक है, अब ये चार पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स आप देख लें. तो 1 0 ये वाला पॉइंट होता है, दिस पॉइंट इज 0 1, ओके, and then this point is 0 minus 1, this point is minus 1 0. ठीक है, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहे होंगे नीचे, so you have to know कि ये कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स बनते हैं. आपने क्या करना है, A और B को आपने देखना है हर ट्रांसफॉर्मेशन से वो कहाँ पे चले जाते हैं. फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस, x एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये 1 0 0 minus 1, where is this going to go? 1 0 0 minus 1, sorry, आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, you have to start from 1 0 0 1. इन पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है. ठीक है, इस 1 0 0 1 से स्टार्ट करना है. सो A is 1 0, remember this is A and this is B. मैं आपके हर फिगर के ऊपर मैंने आपके मार्क किया हुआ है A और B क्या है. So this is your A, that's 1 0, and this is your B, that's 0 1. अच्छा, अगर x एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगी तो A कहाँ चला जाएगा? A will just stay there, and so A dash is exactly the same. So that's why we have 1 0 here. 1 0 आपके पास वहां पे आ गया. ठीक है, अच्छा B कहाँ चला जाएगा? B will go down here, x axis में रिफ्लेक्ट होके, that's B dash. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 minus 1, so that's your B there, that is 0 minus 1. Okay, so something happened here. Okay, so x axis में रिफ्लेक्ट होके क्या होगा? B आपका नीचे चला जाएगा, and that's your B dash, so that is your other point, that's 0 minus 1. So that's the matrix that represents the reflection in x-axis. Similarly, you can look at what happens in y-axis. Let's look at y equals x, for instance. Now, again, the 1 0 कहाँ चला जाएगा? A point कहाँ चला जाएगा? Reflect, okay, that's going to go to A dash here. So that's 0 1. That's the first point here. B कहाँ चला जाएगा? B will go to this point here. That's 1 0. That's B dash. So that's 1 0 here. Okay. Y equals x में reflect होके आपके points इस तरह से change हो जाएंगे. So that's where this matrix is coming from. What happens here? Y equals minus x. A point जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, reflect होके y equals minus x के अंदर. इस तरह B point जो है वो यहाँ पर आ जाएगा. A dash के coordinates क्या बन रहे हैं यहाँ पे? 0 minus 1. So that's why you have 0 minus 1 here. B dash के क्या बन रहे हैं? Minus 1 0. That's why you have minus 1 0 here. So remember, these are basically A dash here and B dash here. Mark those points here as well. So this is your A dash, this is B dash. Again, this is A dash, this is B dash, this is A dash, this is B dash, A dash, and B dash. इस तरह से आपके reflect होके यहाँ पर आ रहे हैं. What happens when you have rotation? So let's say 90 degrees anti-clockwise rotation. उसमें क्या होएगा? आप उन्हीं point से start कर रहे हो, A और B point से. A point कहाँ चला जाएगा rotate होके? A dash पे आ जाएगा, right? इस rotation के बाद B कहाँ चला जाएगा? Rotate होके यहाँ पे नीचे आ जाएगा. A dash के coordinates क्या है? 0 1. B dash के क्या है? minus 1 0. So that's your matrix for 90 degrees anti-clockwise rotation. ठीक है? So similarly, you can look at the other one, what's happening here. A किस तरह से आपके points move हो रहे हैं, उसी तरह से आपके पास ये matrices आ जाएंगे वहाँ पे. Enlargement का matrix आप वैसे याद रख सकते हो. That's the easier one to remember. So
That's k0 and 0k. K is the scale factor here. Now remember, यहाँ पे हमने जो rotation discuss की है और enlargement discuss की है, इन दोनों में center origin होता है, right? Center is origin. Matrices आपके पास जब भी आएंगे, center उसमें origin हुआ करेगा, right? Other matrices are not in your syllabus. या अगर उसको कुछ और वो कहते हैं, आपको वो matrix बताएगा, आपसे खुद पूछेगा नहीं, ठीक है? So center origin होएगा, rotation के अंदर भी, enlargement के अंदर भी, whenever you're dealing with matrices. Enlargement के केस में क्या होगा, k0 0k, so ये scale factor के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर आपका scale factor for example 3 है, scale factor is 3, तो आपका देखें 10 पॉइंट कहाँ चला जाता, ये 30 पे चला जाता, और 01 कहाँ चला जाता, ये 03 पे चला जाता. So your matrix would have been 3003. So जो भी आपका scale factor होगा उसको आप k से replace कर दोगे, k को उससे replace कर दोगे, and that will be your matrix for enlargement. Now how do you use these matrices? For example, if you had to rotate something 90 degrees clockwise about the origin, if you have this triangle here, triangle A, if you had to rotate this 90 degrees clockwise about the origin, what happens? You can either do it using the methods that we discussed earlier, लेकिन आप इसको matrix से भी कर सकते हैं. 90 degrees clockwise rotation about origin का matrix क्या होता है? Let's go there and figure this out. This was the matrix that we had written here, 0, 1 and -1, 0. आप क्या करोगे? इस matrix को यहाँ पे लिखोगे. Sorry, 0, -1 and 1, 0. So that's 0, -1 and 1, 0. That's your matrix here. इसको आप multiply कर दोगे उन coordinates के साथ, right? So coordinates क्या है? X के coordinate. This is your point X. X coordinates are 1, 1. ठीक है? Y के coordinates, they are 2, 1. Z के coordinates are 1, 3. You just multiply these two matrices. Remember, जब आपके ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैट्रिक्स होगा वो पहले लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स बाद में लिखेंगे. तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका रिजल्टिंग मैट्रिक्स होएगा, that will be your coordinates for the image. ये x bar आ गया आपके पास पहले 1, 1, 1 minus 1, y bar is 1 minus 2, and z bar is 3 minus 1. इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, this is what you end up with. Okay? ये आप इनको मार्क कर देंगे फिगर के अंदर, उनको ज्वाइन कर देंगे उन पॉइंट्स को, and that will be your transformed figure. ठीक है? तो मैट्रिक्स इस तरह से यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर. मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स बाद में लिखेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे. Okay, then you have this transformation that is represented by this matrix -1, 0, 0, -1. अब ये इस तरह से, ये आपको जो है वो नोटेशन भी पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है इससे रिप्रेजेंट हुई है, उसने मैट्रिक्स बताया, तो आपको नहीं पता कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है. You don't know about that. So either you can figure out कि कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है. आपको अगर मैट्रिक्स उस तरह से बनाने आते हैं तो आप क्या करोगे, ये आप देख लोगे ये मैट्रिक्स किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है और आप वो डायरेक्टली वहां पे कर लोगे. बट अ क्विकर वे कुड हैव बीन, आप बस इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, नो मैटर व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन दिस इज. आप इसके कोऑर्डिनेट इस तरह से लिख दोगे, दिस इज द मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. कोऑर्डिनेट्स आपने लिख दिए x y z के, इनको मल्टीप्लाई किया, आपके पास जो रिजल्ट आएगा उनको आपने बस प्लॉट कर देना है वहां पे. ठीक है? x bar, y bar, z bar को आप प्लॉट कर दोगे वहां पे, and your result will look something like this. ठीक है? And this is actually the matrix for 180 degrees rotation. तो अगर आप फिगर आउट कर लेते हैं, आप वो डायरेक्टली वहां पे वो भी कर सकते हैं. तो what is happening here? M is being applied on A. M A के ऊपर अप्लाई हो रहा है, आपके पास रिजल्ट आ रहा है B, so that's your triangle B there. Okay? So then you have combined transformations as well. कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन होती है. So let's take an example. Let's say you have a transformation that is reflection in x-axis. You got another transformation that is reflection in y equals x, और इनको rx और rd से represent किया हुआ है respectively. Now let's say वो कहता है कि rd rx आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है a के ऊपर, और ये जो रिजल्ट आएगा that is you going to be your b. अब क्या होएगा, इसमें ऑर्डर का आपने ख्याल रखना है. जो ए के साथ लगा हुआ है, जो उसके बिल्कुल पास है, दैट इज गोइंग टू अप्लाई फर्स्ट. जो उस पॉइंट के बिल्कुल साथ है या उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल साथ ट्रांसफॉर्मेशन लगी हुई है, वो पहले अप्लाई होगी उसके ऊपर, यानी कि रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में पहले करनी पड़ेगी. जो रिजल्ट आएगा उसका, उसको फिर आप उसके ऊपर आप बाहर वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, दैट इज रिफ्लेक्शन इन y equals x. So the first step would be reflection in the x axis. ये पहले अप्लाई होगा, Rx is going to be applied first, and then second will be Rd. जो आप पहले आ रहा होता है वो बाद में अप्लाई होता है. ठीक है? तो ये हमारे पास फिगर थी, ट्रायंगल. ट्रायंगल को हमने रिफ्लेक्ट कर दिया एक्स एक्सिस के अंदर, ये नीचे वाली फिगर आ गई. इसको फिर हमने रिफ्लेक्ट कर दिया y equals x के अंदर, ये हमारे पास
फाइनल फिगर आ जाएगी, दैट इज दिस ट्रायंगल B. ओके, तो पहले x एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया, बाद में y इक्वल्स x में रिफ्लेक्ट किया. And then lastly, you might have seen a couple of questions on inverse transformations as well. So inverse transformation का concept is very straightforward. आपके पास कोई भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन है जो किसी ऑब्जेक्ट को एक इमेज में मैप करती है, तो an inverse of that transformation would be that maps that image back to the original object, right? So for example, आपके पास ये common जो है वो transformations हैं और उनके inverses. So if you have a translation that's A and B, तो आप क्या करोगे, उसका इनवर्स क्या होएगा, बस आपने उनके कंपोनेंट्स के साइन चेंज कर देना ताकि वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए. इनवर्स क्या होएगा, -a -b, उसके बाद साइन चेंज कर दिया. फॉर एग्जांपल इफ द ट्रांसफॉर्मेशन वाज 3 - 5, ट्रांसलेशन वाज 3 - 5, तो इसका इनवर्स क्या होएगा, -3 5. ये ट्रांसलेशन करने से वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन इनवर्स. रिफ्लेक्शन का इनवर्स वही रिफ्लेक्शन होती है. फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो उसका इनवर्स क्या होएगा, वापस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे कैसे जाएंगे, एक्स एक्सिस में दोबारा रिफ्लेक्ट करते हैं. सो दैट्स द सेम ट्रांसफॉर्मेशन अगेन. रिफ्लेक्शन में वही आप दोबारा रिफ्लेक्शन कर दो. सिमिलरली 180 डिग्री रोटेशन करते हैं, 180 डिग्री रोटेशन का इनवर्स इज आल्सो 180 डिग्री रोटेशन. ठीक है, सो वो भी वही रहता है. दैट इज नॉट चेंज. अच्छा, रोटेशन के अंदर आपको देखना है 90 डिग्री से 180 डिग्री के अलावा कोई भी और रोटेशन जब क्लॉकवाइज हो रही होगी, उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, वही रोटेशन विद द सेम सेंटर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज. अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन थी विद सम सेंटर रोटेशन, उसी रोटेशन को आपने क्लॉकवाइज कर दिया, दैट विल बी द इनवर्स. ठीक है, विद द सेम सेंटर रोटेशन. सो आपने एंटी क्लॉकवाइज को चेंज कर दिया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज. नाउ एनलार्जमेंट इज अ बिट ट्रिकी. सो एनलार्जमेंट अगर आप कर रहे हो किसी स्केल फैक्टर k के साथ, तो उसका इनवर्स क्या आएगा, स्केल फैक्टर को आपने 1/k कर देना, उसका रेसिप्रोकल कर देना. फॉर एग्जांपल इफ द स्केल फैक्टर वाज 2, तो उसका जो इनवर्स होएगा उसमें जो स्केल फैक्टर होगा विद द सेम सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, दैट विल बी 1/2. क्योंकि पहले आपकी लेंथ 2 से मल्टीप्लाई हो रही थी, उसको इनवर्स करने के लिए आप क्या करोगे, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. तो योर इनवर्स विल बी लाइक दिस. और आपके स्केल फैक्टर इनिशियली लेट्स से -3 था, उसका इनवर्स क्या होएगा, उसका इनवर्स होएगा -1/3. उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट विल बी योर इनवर्स. Okay, so that's all about enlargement. I hope this was helpful. For a detailed video on all of these transformations, there are also some past paper questions. You can see these links here on your screen. And for other checklist videos, you can see the description of this video as well. You'll find some more checklist videos there as well. Thank you very much, everyone. I'll see you again in another video. Allah Hafiz.